Good morning, learners. Today we will discuss a new topic that is on classical theory of Henry Fayol. But be- before going to start our discussion on the main topic, we have to know some facts about Henry Fayol. So Henry Fayol was a French coal mining engineer and author. He laid the groundwork for management theories and modern practices. His famous book is General and Industrial Management, which was published in the year 1916 in the French language and in English in 1949. He is also known as the father of modern management theory. So Henry Fayol जो थे वो एक इंजीनियर एंड ऑथर थे और उनका जो फेमस बुक था उसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। फ्रेंच लैंग्वेज में ये बुक पब्लिश हुआ था 1916 पे और इंग्लिश लैंग्वेज पे पब्लिश हुआ था 1949 पे। उनको मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। So then coming towards our main topic is the management theory of Henry Fayol. First we have to understand what the term management theory implies. Management theories are a collection of ideas that recommend general rules for how to manage an organization and business. Management theories addresses how supervisors implement strategies to accomplish organizational goals and how they motivate employees to perform at their highest ability. So management theory क्या है? Management theory वो सब आइडियाज का एक कलेक्शन बोल के हम लोग बोल सकते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगा, कैसे मैनेज होगा, उसके जो जनरल रूल्स है वो रिकमेंड करते हैं. Several thinkers, practitioners and academicians of management have contributed to the formation and development of management principles, thought and approaches. Henry Fayol is one of them who contributed to administrative management process. मैनेजमेंट फील्ड का बहुत सारा थिंकर्स एकेडमिशियंस ने ये मतलब मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो डेवलप करने में बहुत लोगों का क्या है कंट्रीब्यूशन है और उनमें से एक है हेनरी फेयोल. So Fayol's principles of management. Fayol believed that the soundness and good working order of the body corporate depend on a certain number of conditions termed as principles, laws or rules. So he produced 14 principles for administration. Fayol ने एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसको चलाने के लिए 14 प्रिंसिपल्स का एडवोकेसी किया था. वो सब क्या है? फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क. Fayol had a belief that dividing work amongst the workers will enhance the quality of the product. Similarly, he also concluded that the division of work improves the productivity, efficiency, accuracy, and also speed of the workers. Thus, the more people specialize, the more efficiently they can perform their work. एक प्रिंसिपल है जो काम है उसका डिवाइड करना amongst the workers. ये जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी एनहेंस करने में हेल्प करता है. Then another principle is authority and responsibility. Authority facilitates the management to work efficiently and responsibility makes them responsible for the work done under their guidance and leadership. ये यही मीन करता है जिसके पास अथॉरिटी है इंस्ट्रक्शन देने का, उन लोगों के इंस्ट्रक्शन के वजह से जो आउटकम आएगा, काम का जो आउटकम आएगा उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? जिन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है. Then another principle is discipline. Members in an organization need to respect the rules and agreements that govern the organization. To Fayol, discipline results from good leadership at all levels of the organization, fair agreements and judiciously enforced penalties for infractions. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होना चाहिए और जो एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स एग्रीमेंट्स है उसको क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए एम्प्लॉइज को. देन अनदर प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. Each employee must receive instructions from only one person.
Fayol believed that when an employee reported to more than one manager, there may arise the situation of confusion and conflicts in instructions. Fayol ने बोला है कि एक एम्प्लॉय को या एक एम्प्लॉय एक ही पर्सन से इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा। एक एम्प्लॉय बहुत सारे पर्सन और मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक एम्प्लॉय को वहां पे एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन अराइज हो सकता है। देन अनदर प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। To Fayol, the work to be done in an organization should be organized so that employees work in harmony towards the same objectives using one plan under the direction of the one manager. Fayol ने also advocate किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मैनेजर के डायरेक्शन में एक ही प्लान यूज करके एक ही ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। Another principle which is advocated by Henry Fayol is subordination of individual interest to the common goal. In any undertaking, the interest of employees should not take precedence over the interest of the organization as a whole. उन्होंने यही एडवोकेट किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है उसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। प्रायोरिटी देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का एज ए होल जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको। देन अनदर प्रिंसिपल इज रेमुनरेशन। दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Compensation for work should be fair to both employees and employers. Then another principle is centralization. Decreasing the role of subordinates in decision making is centralization. Fayol believed that managers should retain final responsibility but should at the same time give their subordinates enough authority to do their jobs properly. सेंट्रलाइजेशन जो काम है ये यही मीन करता है कि डिसीजन मेकिंग का जो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन लेने का जो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनेजर्स के पास रहेगा। Then another principle is scalar chain. Fayol highlights that the hierarchy steps should be from the top to bottom. This is necessary so that every employee knows their immediate senior. Also, they should be able to contact any if needed. स्केलर चेन जो प्रिंसिपल है वो यही मीन करता है जो हायरार्की है, हायरार्की ऊपर से नीचे तक आना चाहिए और ये जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसके जरिए जो एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो लोग जानेंगे उनका इमीडिएट जो सीनियर कौन है और कुछ ऐसा प्रॉब्लम अराइज होने से वो लोग उनका जो इमीडिएट सीनियर है उनको रिपोर्ट कर सकते हैं या कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन अनदर प्रिंसिपल इज ऑर्डर। An organization should maintain a well-defined work order to have a favorable work culture. This positive atmosphere in the workplace will boost more positive productivity. फेयोल ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डेफिनिट वर्क ऑर्डर होना चाहिए और एक अच्छा वर्क कल्चर क्रिएट होना चाहिए जिसके जरिए प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट अप होगा। देन अनदर principle is equity. All employees should be treated equally and respectfully. It is the responsibility of a manager that no employees face discrimination. और एक principle है equity. एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और ये मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी एम्प्लॉय उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे। Then another principle is stability of tenure of personnel. An employee delivers the best if they feel secure in their job. It is the duty of the management to offer job security to their employees. मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का ये ड्यूटी है कि उनका जो एम्प्लॉयज है उन लोगों को जॉब में सिक्योरिटी ऑफर करना, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं होने से एक एम्प्लॉय उनका बेस्ट नहीं देगा और एक एम्प्लॉय जब फील करेगा कि उनका जो जॉब है वो सिक्योर है तभी वो लोग क्या कर सकते हैं, उनका जो बेस है वो डिलीवर करते हैं।
Then another principle is initiative. The management should support and encourage the employees to take initiatives in an organization. It will help them to increase their motivation and morale. जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को जो एम्प्लॉइज उन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन लोगों को एनकरेज करते रहना चाहिए टू टेक इनिशिएटिव. देन लास्ट principle advocated by Henry Fayol is spirit de corps. It implies team spirit. Team spirit is a great source of strength in the organization. Management should strive to create unity, morale, and employee cooperation. Spirit de corps जो टर्म है, ये फ्रेंच टर्म है, वो इंप्लाई करता है टीम स्पिरिट को. और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी, मॉरल एंड एम्प्लॉय के बीच एक कोऑपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश करना चाहिए. Fayol also advocated 5 key functions of management. Then one is planning. The first function of management is planning. Planning involves setting objectives and developing a course of action for achieving those objectives. It requires the managers to think ahead and anticipate potential problems or opportunities that could impact the organization. Once a plan is created, it is important to monitor progress and make adjustments where necessary to ensure that objectives are still being met. फेयोल ने एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसका 5 फंक्शन के बारे में एडवोकेट किया है. एक है प्लानिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स होगा और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कैसे काम करना पड़ेगा उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना एक मैनेजमेंट का क्या है, काम है. देन अनदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट is organizing. This involves putting the resources of the organization to work in a way that will best accomplish the objectives outlined in the plan. This includes things like developing structure, assigning tasks, allocating resources. It is crucial for managers to consider both the short-term and long-term needs of the organization when organizing. So, मैनेजमेंट का और एक फंक्शन है ऑर्गेनाइज करना, एक स्ट्रक्चर डेवलप करना. उसके बाद जो काम है वो असाइन करना और जो रिसोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशन का उसको प्रॉपरली एलोकेट करने का जो काम है वो ऑर्गेनाइजिंग जो टास्क है वहां पे इन्वॉल्व होता है. Then another function is commanding. This involves giving employees the direction they need to complete their task and ensuring that they have the resources they need to do so. It also includes setting performance standards and providing feedback to employees on their progress. For this function to be effective, managers need to have a clear understanding of what they expect from their employees and be able to communicate this in a clear and concise way. Commanding. Another function of management according to Fayol is commanding. ये क्या मीन करता है कि जो मैनेजर्स है उन लोगों का एक क्लियर व्यू पॉइंट होना चाहिए कि उन लोगों को एम्प्लॉय से क्या चाहिए और उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर एंड कॉन्साइज वे में एम्प्लॉय के साथ क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए. Then another function is coordinating. This involves bringing all the different parts of the organization together and making sure they are working towards the same goal. This includes things like communication, team building, and conflict resolution. Coordinating is important because it helps to ensure that the organization is running smoothly and efficiently. और एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट्स है उन डिपार्टमेंट के बीच और एम्प्लॉइज के बीच एक कोऑर्डिनेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना. तभी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करने में क्या होगा, आसान होगा और एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगा. देन अनदर फंक्शन इज कंट्रोलिंग. द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग. This involves monitoring progress towards objectives and making changes where necessary to ensure that
goals are still being met. It also includes taking corrective action when problem arises. Controlling is essential because it helps managers to identify and correct issues before they get out of hand. जो लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है कंट्रोल करना. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो एम्प्लॉइज के जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर नजर रख के और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका कितना प्रोग्रेस हो रहा है वो सब के ऊपर मॉनिटर करके सुपरवाइज करके मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है उन लोगों के काम के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. So these are all about the principles and functions advocated by Taylor in the field of management. But there is a question arise. Is there any importance of these principles? एक क्वेश्चन ऐसा अराइज हो सकता है कि ये जो प्रिंसिपल्स है उसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? सो द आंसर इज यस. These 14 principles are still widely influential in making sound management decisions and bringing best results for both the company and the employees. Fayol's management principles are widely credited for making employees highly efficient and productive, generating the best possible results and effortless functioning of the organization. By following these principles, an organization can be achieve the following achievements. One is structure. Every company requires a structure and a flow to prosper truly. These management principles provide a structure to the management and encourage the authoritative personnel to take charge and bring efficiency to the employees. Again, effective communication is also the key to achieve maximum productivity while clarifying the end goal. Clear and effective communication is crucial in managing many employees and teams, ensuring the best results. एक क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जरूरत है एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए और एक बेस्ट रिजल्ट जो मिलेगा वो एंश्योर करने के लिए भी एक क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन जरूरी होता है. देन apart from that, Fayol's management principles give a firm perspective of how important it is to have good management in place to achieve maximum efficiency while doing smart work. Any organization is nothing without its employees, as we all know. It is very important to gain the employees' trust and loyalty as they are an important cog in running the company smoothly and efficiently. Ensuring these management principles are observed and practice can be a huge step in gaining trust and building healthy employee relations. So, एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इट्स एम्प्लॉइज कुछ भी नहीं है. तो ये जो एम्प्लॉइज है उन लोगों का जो विश्वास लॉयल्टी वो हासिल करना ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा बात है और जरूरी है क्योंकि एक कंपनी ये लोग ही रन करते हैं और एक कंपनी स्मूथली एंड इफिशिएंटली रन करने के लिए एम्प्लॉइज का जो विश्वास हासिल करना बहुत जरूरी होता है. और ये जो प्रिंसिपल्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के में ये सब प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करने से या ये सब प्रिंसिपल ऑब्जर्व करने से एक एम्प्लॉय के बीच एक विश्वास का एनवायरनमेंट पैदा होता है और एक हेल्दी एम्प्लॉय रिलेशन बिल्डअप भी होता है. Then coming towards a criticism, Fayol's school of thought is considered too rigid and can only be applicable in a formal structure. While this theory is practical in some aspects, it is argued that it is not completely useful as the employees should also be given the freedom to make decisions. Fayol का जो theory है वो क्रिटिसाइज किया है ऑन द ग्राउंड दैट ये थ्योरी प्रैक्टिकलिटी में हम लोग तो यूज नहीं कर सकते कम्प्लीटली मतलब यूजफुल नहीं है क्योंकि ये जो थ्योरी है उसमें बोला गया है कि डिसीजंस लेने का जो राइट है वो रहेगा जो टॉप ऑफिशियल है और मैनेजर है उनके पास. बट एक ऑर्गेनाइजेशन में
एम्प्लॉइज को भी मतलब डिसीजन लेने का जो फ्रीडम है वो देना चाहिए. So this is all about the concept given by Fayol in the process of management, or we can say this is about the administrative theory advocated by Henry Fayol. Here we have discussed 14 principles of Henry Fayol, then 5 key functions of management, and we have also discussed is there any importance of these principles and also the criticism. Okay, so if you have any query, then write the doubt in the comment section. I will try to clear your doubt in the next part of our video, which will be on scientific management theory.